most of the Nigerian guys. Like for the Nigerian guys, she wanted to say something. Okay, say. Yeah, good afternoon everyone. My name is Miriam. I work in a Lagos shipping as a waitress. So if you want to get anything, birthday party, get together party, anything you want to do, we're allowed to come down to Lagos shipping. You understand? And we have many spaces. We have the changing room, we have the space for barbecue, we have anything, different kind of toy for the children. If you want that, it's applicable. You can come down to Lagos shipping. Don't forget the place Dan and Den, Oceanfront Club. So thank you very much. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का प्लान है, हम जा रहे हैं एलिगोशी बीच। और आज हमें पहले से पता है कि हम कहाँ जाएंगे। नॉर्मली वीडियो में हम ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ जाना है, पर आज हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ एलिगोशी बीच। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस व्लॉग टू, बिकॉज लास्ट व्लॉग्स, ओ माई गॉड, you guys amazing. Thank you so much for like, share and subscribe, and thank you so much Nigeria that you are giving me so many subscriber and you like my videos and my efforts. Thank you so much Nigeria. So without wasting any more time, let's go to the Aligoshi beach. I forgot most of the time, so Aligoshi beach चलते हैं. Let's go. हम खोलेंगे ऐसे गाड़ी, और हमने ऐसे गाड़ी खोल ली, नहीं खोली, फिर खोलेंगे एक दफ़ा। ओए, मैं भूल गया हाउ टू ओपन दिस कार। ओके, खुल गई। कभी कभी खोलते हैं ना हम लोग इसलिए। एनीवे, लेट्स गो एंड ये तो बड़ा बुरी बात है यार, हमें ओके। So safety precaution is very important. So whenever you start driving, so please wear your seat belt. We always said whenever we were on the bike, so we always said that please wear the safety helmets and all safety gears. So अब बाइक से मैं मूव हो गया हूँ थोड़ा सा गाड़ी पर। तो अब प्लान ये है कि गाड़ी में जो है ना, उसकी प्रिकॉशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइक में तो ये होता है कि माय गॉड, सॉरी। तो हाँ, ये सही है। तो अभी प्लान ये है कि एलिगोशी बीच चलते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है लाइफ में, और चिल माहौल चल रहा है। और दिन भी कुछ ऐसे चल रहे थे कि ईद के डेज थे और हमें छुट्टियां मिल गई थी अच्छी, तो हमने इसलिए प्लान कर लिया। वरना ऑल द वे वी आर ऑलवेज ऑन वर्क एंड वी आर डूइंग सो मैनी जॉब्स। सो दैट्स द थिंग। सो जो आजकल थोड़ी सी बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के ऊपर, कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट मिल रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इतनी ज़्यादा, तो हर बंदा मुल्क से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे और यूट्यूब पे एवरीवेयर द पीपल आर मेकिंग वीडियोज़ हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, अबाउट टू क्रिप्टो, बाइनेंस, कोटेक्स, टेलीग्राम सिग्नल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। एवरीबडी इज just talking about to just earn money, but I'm telling you everything is not good. 100 में से 2 बंदे पैसे कमाते हैं और बाकी 100 में से 98 बंदे जो हैं वो पैसे जो है वो डुबा देते हैं। बाकी उन 2 बंदे जो होते हैं वो दिखा रहे होते हैं कि हमने ये सिग्नल्स किए, ये किया, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन, because as a YouTuber I got so many messages on my Facebook, so many messages on my Instagram that join us and you are public figure, so you can join us and we will make money together and this. So बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिवील कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैसेजेस रिवील कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन लोग हमसे क्या क्या कमिटमेंट करते हैं। बट आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन जॉब। पीपल आर betrayed so many peoples, but I'm worried about that people don't have a stress. Even in Urdu we call said that किसी को खौफ खुदा नहीं है। Everybody is just wanted to make money by himself or by himself and for his family, but they don't know that अगर आप अपनी औलाद को हराम खिलाओगे, इस तरह के मामलात खिलाओगे, तो फिर आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि he will be and she will be good for you. This is the nature of job. This is karma. This is simple life. That if you are if जो आप बीच बोओगे वही आपको मिलेगा। That's it. तो वीडियो लंबी हो जाएगी, so I just wanted to share the Aligoshi beach, but that is very small message about to crypto, about to Binance and about to so many things. So please don't fall
all, don't participate all of those things. I'm telling you. So instead of this, go on the Fiverr and Upwork, freelancer.com, and so many other works where you can get money. But thank you so much for this now. So next we will be joined, you guys will be join me on the Elegushi Beach, Lagos, Nigeria. Stay tuned and keep subscribe. Thank you. अच्छा, लेगोस की जो है ना वो सबसे खूबसूरत बात क्या चीज़ है, वो बात ये है कि अभी हम घर से निकले थे तो मौसम अच्छा था सिर्फ, ओके, और हमने अच्छी अच्छी बातें भी की. अब जब हम थोड़ा सा आगे आए तो लेट्स सी द व्यू. द रेन हैज़ बीन स्टार्टेड एंड यू नो दिस इज़ फैबुलस. हल्की हल्की सी ठंड, सुपर वेदर, and you have a chance to go out. That is the blessings from the Allah. Thank you so much. Thank you so much. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. So plan is what कि जब हम अभी एलिगुशी पहुंच गए, एलिगुशी बिल्कुल सामने है, बट यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि कैशलेस नाइजीरिया है. So we always have to buy the cash. So this is the POS machine. बाबा show me your machine. Show me your machine. So this is the POS machine. और इससे मैंने 5,000 रुपये नायरा कैश ले रहा हूँ, तो ये 100 नायरा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा मुझसे. बाबा hello, I need 5,000 naira. How much you will charge? 100 naira. 100 naira. Okay. तो इसको मैंने बता भी दिया है. So he will charge 100 naira और he will give me the 5,000 naira cash. समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम? चलो शुरू करते हैं. आमिर भाई आई मिस यू. सो भाई ये देख लो, ये चार्ज हो रहा है और ये इसने अप्रूव कर लिया कि अप्रूव विड्रॉल हो गया है, और ये मेरा कार्ड है. बाबा अप्रूव. ओके, नाउ गिव मी कैश. तो इसने ये ना 5,000 नायरा मुझे दे दिए हैं. चेक करो आप, खूबसूरत लोग, ब्यूटीफुल पीपल. ऑलमोस्ट जो है वो मैं एलिगुशी बीच पे पहुंच गया हूँ. अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो बोट, वेलकम टू एलिगुशी बीच. ओके, सो दीज आर द पीपल आर देयर, सो मे बी दे विल आस्क सम मनी फॉर द एंट्रेंस. And I will share with you that how much money they are asking us to go inside. Let's see. Well, as I told you before that they charge 3%. We are 3%. Elegushi 2,000 naira. So 6,000 we charge. Okay. So the scene is what? Okay, they charge for every single thing. Every single thing. So पहले टिकट लिया और फिर दैट जब गाड़ी पे लेकर आए तो बोल रहे दोबारा पार्किंग दो. तो इनका ये बड़ा सीन है. मैं बड़ा अपसेट होता हूँ इनकी इन चीज़ों से कि छोटी चीज़ों पे पार्किंग मांगते हैं. लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा इसके बारे में कुछ. यहाँ पर एक सिलसिला ये है एलिगुशी बीच के ऊपर के पत्थरों के ऊपर इस तरीके से उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, और इसको देखकर मुझे जो है ना वो चाइना पोर्ट याद आ गया. लेकिन ये वैसा नहीं है फ़िलहाल. लेकिन ये पीपल जो है वो इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं एलिगुशी बीच में, जो मैंने आपको बताया. ये पता नहीं क्या बेच रहा है इसके ऊपर. और ये देखें नाइजीरियन ड्रेसिंग, और ये पूरा एलिगुशी बीच जा रहा है. तो आज मैंने प्लान किया कि मैं जो है वो झूला झूलूँगा यहाँ पर, और मैं इस वक्त झूले में आ चुका हूँ, और एक बच्चा मेरे साथ इसमें बैठ गया है और ये बड़ा एंजॉय करेगा. बाबा से हेलो. तो ये बैठ गया मेरे साथ और मैं आ गया हूँ यहाँ पर इस वक्त झूले में, और मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ. और ये है सी का मंजर. ओह माय गॉड. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. Say hi. तो हम एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है. हेलो, बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत मज़ा कर रहा है भाई, बहुत मज़ा कर रहा हूँ. Okay, what's your name? Kabir.
Are you Hausa? Igbo? No, Hausa. Hausa. So what is the difference between you and the other tribes? The good qualities, only good qualities. Na Hausa. Yeah, in Hausa, yeah. Ina Hausa. Yeah. Yau ma sai da musu bayani da abin da zan faɗi ba. Or you don't eat? Speak loudly. Na Hausa ne. Na Hausa nake yi. Muhammad. So Muhammad, I just wanted to ask that makes you different from the other tribes. What is good in your tribe? Only good things. We are the same with Yoruba, Hausa, Igbo. Okay. All we are in the same, Okay. and we are in the same country. Okay. So that is. So what is the difference between you and Igbo and Yoruba and Hausa? Sorry. The difference is a language. Only language? Yeah. Okay. We are not different, just only language. Okay. We are, you know that we have Yoruba, Igbo, Hausa. Okay. So that's three. These are the three famous tribes in Yeah. Nigeria. Yeah. These are the three famous tribes in Nigeria. Yes. The big tribes. I can't know this. Okay. Because the thing that I know, we are the same thing with Yoruba and Hausa. Okay. So thank you Muhammad. Nice to meet you. We'll see you again. Thanks. तो फाइनली सीन ये है कि मैंने एलुगुशी बीच तकरीबन देख लिया है, बट मैं जो सोच कर आया था मुझे उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगा। तो बस मेरा यही प्लान है कि ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकूंगा, बस यहाँ से थोड़ी देर में निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बट एक्सपेक्टेशन जो थी वो ब्रेक हुई, बट इट्स फाइन, यू कैन से इट्स फाइन। और मैं थोड़ा सा लिटिल बिट व्यू दिखा दूँगा, और इसका रेंट जो है वो 2000 मैंने आपको बता दिया था। दैट्स इट फाइनली, दैट्स ओके कॉमन। तो यहाँ पे बैठने की भी जगह है और आप घूम भी सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हैं, मगर बाय बाय।